हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट 3 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो पहले हम लिख लेंगे सब फॉर्मूलेज जो हमें लगने वाले हैं वर्कशीट 3 में। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो फॉर्मूले। देखो, मैंने लिया है sin 2a। आप यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, a मतलब एंगल है, sin 2 आप थीटा भी लिख सकते हो। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज लिख लिया हमें ये वर्कशीट में, और आपको लर्न भी करना है। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो मैंने लिखा है यहाँ पे a बिलोंग्स टू r। a की जगह आप थीटा भी ले सकते हो। थीटा बिलोंग्स टू r मतलब थीटा की वैल्यू रियल नंबर्स में ही रहेगी सिर्फ। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2a। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2a। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 4a अपॉन 1 प्लस cos 4a। और इसमें एक कंडीशन है, और एक वो क्या होती है, tan 2a में एक कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। a क्या नहीं चाहिए, ऑड मल्टीपल नहीं चाहिए 90 डिग्री का। ऑड मल्टीपल्स मतलब 90, 270। ठीक है, वो नहीं चाहिए, ओनली इवन मल्टीपल्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin a का। sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू cos a/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan ऑफ a/2 ठीक है। sin a हमने इसका आधा कर दिया, हमें ये भी फॉर्मूला यूज होगा और ये भी फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, मैंने एंगल सिर्फ हाफ कर दिए। sin 2a था तो sin a इक्वल्स टू 2 sin a/2 cos a/2। यहाँ पे होल एंगल था पूरा a, मैंने उसको हाफ हाफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी हाफ किया है। तो sin a होगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2 इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2।
नेक्स्ट फॉर्मूला है cos A. cos A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर A बाई 2. मैंने इसमें भी हाफ किया है, पहले लिखा था मैंने cos 2A और इसमें मैंने हर एंगल को हाफ हाफ कर दिया, मतलब cos से आया A का A बाई 2, A का A बाई 2, ठीक है. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2 2 cos स्क्वायर A बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 2. cos A को हम इस 4 टाइप्स से लिख सकते हैं. ये फॉर्मूले पूरे आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हर फॉर्मूला कोई ना कोई प्रॉब्लम में यूज हो रहा है, ठीक है. अगेन tan A के लिए अगेन इसको भी मैंने हाफ कर दिया. पिछले इसमें मैंने tan 2A लिखा था, अभी हाफ करके लिखा है, एंगल को हाफ कर दिया. मतलब क्या किया, 2A था, अगर उसका हाफ करोगे तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ A. तो tan A का फॉर्मूला है 2 tan A बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2A अपॉन 1 प्लस cos 2A. इसमें भी एक कंडीशन है, वही कंडीशन है, A is not और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और 90 डिग्री. इसमें भी यही कंडीशन है, A और मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई बाई 2 का, मतलब एंगल 90 या 270 नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगेन sin 3A इक्वल्स टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A. cos 3A का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A. tan 3A is equals to 3 tan A minus tan cube A upon 1 minus 3 tan square A. अगेन sin 3A है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A. cos 3A होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A. tan 3A is equals to 3 tan A minus tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A. इसमें अगेन कंडीशन बनती है A is not और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 4 या पाई बाय 6, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज साइन A. साइन A इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ A बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ A बाय 3. साइन 6A इक्वल्स टू 3 साइन 2A
-4 sin क्यूब 2a। cos a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब a/3 -3 cos a/3 cos 6a is equals to 4 cos क्यूब 2a -3 cos 2a। ठीक है। sin 3a is equals to 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। cos 3a equals to 4 cos क्यूब a minus 3 cos a। tan 3a is equals to 3 tan a minus tan क्यूब a upon 1 minus 3 tan square a, where a is not odd multiple of pi by 2, pi by 4 and pi by 6. Again sin a is equals to 3 sin a by 3 minus 4 sin क्यूब of a by 3। sin 6a होता है 3 sin 2a minus 4 sin क्यूब of 2a। cos a है 4 cos क्यूब a by 3 minus 3 cos a by 3। cos 6a है 4 cos क्यूब 2a minus 3 cos 2a। ठीक है। Now tan a बचा था, tan a equals to 3 tan a by 3 minus tan cube a by 3 upon 1 minus 3 tan square a by 3। ठीक है। tan a is equals to 3 tan of a by 3 minus tan cube a by 3 1 minus 3 tan square a by 3। now sin square a, sin square a का फॉर्मूला है 1 minus cos 2a upon 2। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। tan स्क्वायर a होता है 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 plus cos 2a upon 1 minus cos 2a। ठीक है। sin square a is equals to 1 minus cos 2a upon 2, cos square a equals to 1 plus cos 2a upon 2। सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है इसमें, sin है तो माइनस, cos है तो प्लस। अगर tan स्क्वायर a क्या होगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो आप साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है। कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, तो इसको उल्टा कर दो, 1 प्लस कॉस 2a ऊपर आएगा, 1 माइनस कॉस 2a नीचे आएगा। ठीक है। Now sin square a by 2 equals to 1 minus cos a upon 2। cos square a by 2
इज 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 tan स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए कॉट स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर से हमने इस एंगल्स को क्या किया है, पिछले इसमें साइन स्क्वायर ए था, हमने अब इस बार एंगल्स को हाफ कर दिया है। ए था तो ए बाई 2, फिर यहाँ पे 2a था तो 2a का हाफ कर दिया तो हो गया a। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, tan स्क्वायर ए बाई 2 क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इसको साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बाई 2 किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर ए बाई 2। सो इसका इनवर्स कर दो, 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आया, ये न्यूमरेटर में 1 अपॉन वन माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में गया। ओके, अभी कुछ वैल्यूज है, फॉर्मूलेस कंप्लीट हो गए हमारे। अब वीडियो को पॉज करके फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत कंपलसरी फॉर्मूलेस है। नाउ सम वैल्यूज, साइन 18 ये है कुछ साइंस की स्टैंडर्ड वैल्यूज, जिसको आप लर्न करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। साइन 18 की वैल्यू है √5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन 22.5 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन 2, साइन 36 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, साइन 54 की वैल्यू होती है 54 डिग्री की वैल्यू है √5 प्लस 1 अपॉन 4। नाउ कॉस की वैल्यूज, कॉस 18 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 एंड कॉस 36 इक्वल्स टू √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन आपके क्वेश्चंस में यूज होगी।
Now formulas are completed. Note it down by seeing the video and by pausing it. Okay. Now we will start with worksheet 3. Now first question is sin A equals to 12 by 13. साइन ए दिया है 12 by 13 और साइन 2a फाइंड करना है. We have to find sin 2a. Okay. Now sin a is given. Formula for sin identity was sin square a plus cos square a is equals to 1. This is the identity we know. Sin square a plus cos square a equals to 1. Now from this we can find out cos a. So cos square a will be 1 minus sin square a. So cos a will be under root of, if we take square root of both sides, it will be cos a equals to under root of 1 minus sin square a. Now put the value of sin a in this. So we will get cos a. Cos a equals to under root of 1 minus. Sin a is given as 12 by 13, but here it is square. So we will write the square of it. 12 upon 13 whole square. Okay. So cos a will be equals to under root of 1 minus 12 square is 144 and 13 square is 169. So cos a will be equals to, we will take LCM. LCM will be 169. So 169 minus 144 upon 169. So it will be equals to 169 minus 144 is 25. Upon 169. So if we take square root, it will be 25. Square root of 25 is 5 and square root of 169 is 13. So we got the value of cos a equals to 5 by 13. I write here cos a equals to 5 by 13. Okay. Now we have to find sin 2a. We have just written the formula. Sin 2a is equals to 2 sin a into cos a. This is the formula for sin 2a. Sin 2a equals to 2 sin a into cos a. So it will be 2 multiplied by sin a is given as 12 by 13 and cos a we have calculated as 5 by 13. So it will be 5 by 13. So what will be the answer? 12 5 is 60, 60 2 is 120 and 13 multiplied by 13 is 169. So we have got the value of sin 2a. Sin 2a equals to 120 upon 169. So our answer is third option, 120 upon 169. Okay. Now second one, cos 2 theta equals to x. And we have to find sin theta. So one of the formula we have written was sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta upon 2. It was the formula we have just written. Okay. It will be 1 minus cos 2 theta. It is given as x. So we will write here x. 1 minus x upon 2. This is the value of sin square theta. Okay. So we want sin theta only. So if we take square root on both sides,
it will be sin theta, and this will go into under root. So it will be plus or minus under root of 1 minus x upon 2. Okay. If we take square root, it can be plus or minus. So it is plus or minus under root of 1 minus x upon 2. So the option is second one, that is plus minus sin theta equals to plus minus under root of 1 minus x upon 2. Okay. Now third one, cos theta is equals to x. And we have to find cos 2 theta. Okay. So we have written again the formula for cos 2 theta. The formula for cos 2 theta was 2 cos square theta minus 1. Okay. Formula for cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So again we will put the value. We want cos 2 theta. So here it is cos 2 theta. We will just put the value of cos theta here. So it will be cos, it is square. It is just cos theta. So we will take here square. 2x square minus 1. So we have got the answer. 2x square minus 1 cos 2 theta equals to 2x square minus 1. That is third option. Okay. All the problems are based on just formulas. Now fourth one. Fourth one is given as 2 sin 30 into cos 30. Okay. We have to find the value of this 2 sin 30 into cos 30. So we can solve it by just two methods. Here sin 2 theta. Formula for sin 2 theta was 2 sin theta into cos theta. Formula for sin 2 theta was 2 sin theta into cos theta. It is also in the form of 2 sin theta into cos theta. Okay. Theta here is 30 degree. Theta is given as 30 degree. So right hand side is given. So we can calculate left hand side. So we can get the answer. Sin 2 theta will be equals to sin of theta is given as 30 degree. So it will be 2 multiplied by, here is 2. So I add 2. 2 into 30. Okay. So it will be 30 into 2 is 60. Sin 60 is root 3 by 2. Okay. So we have got the answer as root 3 by 2. Okay. One more method. By not putting in formula, we can directly write the value of sin theta and cos sin 30 and cos 30. So it will be, if we directly write the values, it is 2 multiplied by sin 30 is 1 by 2 and cos 30 is root 3 by 2. Okay. So if we divide by 2, 2 and 2 will get cancelled and answer will be root 3 by 2. Okay. So you can solve by any of these two methods. Okay. So option is third one, that is root 3 by 2. Now fifth question. 4 cos cube 10 degree. Minus 3 cos 10 degree.
you have to find the value of this. Okay. Again, the formula is required here. It is in the form of the formula of cos 3 theta. Formula for cos 3 theta was 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay. This is the formula we have written in the starting of the lecture. Okay. Cos 3 theta equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay. So it is in the form of this 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Theta is 10 degree. So we can directly put here theta as 10 degree. So it will be cos of 3 into 10. So it will be cos 30, and cos 30 is root 3 by 2. Okay. So our answer is root 3 by 2. Just we have put it in the formula. Okay. Option is third one, root 3 by 2. Now sixth question. 1 minus cos theta upon sin theta. So in this we have to find this. In this we require two formulas. Okay, that is sin square theta by 2. Sin square theta by 2 was 1 minus cos theta by 2. This is the first formula. We take it as equation 1. Now second equation we require is equation means formula 2 sin theta into cos theta it is 2 sin theta by 2. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 is equals to sin theta. Formula for sin theta was 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, if we write sin theta by 2 into cos theta by 2, it will be equals to sin theta. I have divided by 2 on both sides, so it will be 2 upon 2 is 1, and this 2, if I divide in right hand side, it will be sin theta by 2. Okay. So put it as equation 2. Okay, we have got equation 1. This is the formula itself, and this we have derived from this formula. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 is equals to sin theta. We have divided these two on this side. So we have got first equation and second equation. If we divide first equation by second equation, first equation divided by second equation, what we will get? First write left hand side, sin square theta by 2 upon sin theta by 2 into cos theta by 2. It will be equals to, take right hand side, 1 minus cos theta upon 2 upon right hand side of second equation is sin theta upon 2. Okay, I have divided first equation with second equation. So it is sin left hand side to left hand side, sin square theta by 2 divided by left hand side of second equation, that is sin theta by 2 into cos theta by 2, and right hand side with right hand side.
first equation right hand side is 1 minus cos theta upon 2 and second equation right hand side is sin theta upon 2. Okay. So now if we separate it, it is sin square theta by 2. If I write separately, it will be sin theta by 2 into sin theta by 2 upon sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, I have separately written sin square theta by 2. Sin square theta by 2 is sin theta by 2 into sin theta by 2, and in denominator it is sin theta by 2 into cos theta by 2. So it will be equals to, denominators of both will get cancelled as it is same. 2 and 2 will get cancelled. It will be 1 minus cos theta upon sin theta. Okay. So here in left hand side, sin theta by 2 and sin theta by 2 will get cancelled, and again sin theta by 2 upon cos theta by 2. Sin upon cos is tan. So it will be tan theta by 2. Okay, sin upon cos is tan, so I have written tan theta by 2 and 1 minus cos theta upon sin theta. It is the question we require the answer of. 1 minus cos theta upon sin theta. It has come tan theta by 2. Okay, so the option is first one, tan theta by 2. Okay, got it? Now seventh question is cos 2a is equals to cos 2a, and options are given cos square a minus sin square a. Second one is 2 cos square a minus 1. Third one is 1 minus 2 sin square a. And fourth one is all of these. So we have to find cos 2a. See here, cos square a minus sin square a. We have written the formula for cos 2a. It was cos square a minus sin square a. It is correct. Again second formula 2 cos square a minus 1. That was also the formula for cos 2a. Now third one, 1 minus 2 sin square a. It is also the formula for cos 2a. We have written, okay? Just see the video and note down all the formulas, okay? So these are, all three are formulas of cos 2a. So our answer will be all of these, okay? All of these are the formula for cos 2a. So all are correct. Now 8th question. Sin theta is given as 1. Sin theta is equals to 1 and we have to find cos 2 theta. In the previous question, we had seen the formula for cos theta, cos 2 theta, and one of them was 1 minus 2 sin square theta. Okay, so we have to find cos 2 theta. So just put the sin theta, here is 1. So sin square theta will be 1 square. 1 minus 2 into sin theta is given as 1. Here is square. So we will take square. It is 1 minus 2. It will be equals to minus 1. So the value of our cos 2 theta has come
as -1. Okay, so the option is first one. Okay, now ninth one, sin theta plus cos theta whole square minus sin theta minus cos theta whole square. We have to find the value of this. Okay, so again it is a plus b whole square. Okay, and it is a minus b whole square. Here a is sin theta and b is cos theta. Here is also a is sin theta and b is cos theta. So the formula for a plus b whole square was a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square was a square minus 2ab plus b square. Okay, we will use this formulas in this. So sin theta plus cos theta whole square will be a square, means sin square theta, plus twice ab means 2 sin theta into cos theta, plus b square means this cos square theta. Okay, minus, here is minus, I will take bracket because signs inside the bracket will change. Okay, so a minus b whole square, a square is sin square theta minus twice of ab 2 sin theta into cos theta, plus b square, b is cos theta, so cos square theta. I am writing here stepwise. Okay, for your understanding. If you can directly write, you can directly write the after practicing. Okay, don't write directly without practicing. Okay, so here it will be sin square theta plus 2 sin theta into cos theta plus cos square theta. Now here it is minus, we have to multiply minus inside the bracket. So it will be minus sin square theta, minus and minus will get plus. So it will be 2 sin theta into cos theta, and this minus plus will get minus. So it will be minus cos square theta. Okay, now sin square theta, and here it is minus sin square theta. So it will be 0, cut it down. Now cos square theta, here it is minus cos square theta. So it will also get cancelled. It will be 0. Now what is remaining? 2 sin theta into cos theta plus again 2 sin theta into cos theta. Now again it is the formula of sin 2 theta. What was the formula for sin 2 theta? Formula for sin 2 theta was 2 sin theta into cos theta. Okay, this is also in the form of 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta. So we can write here sin 2 theta directly. Okay, sin 2 theta plus sin 2 theta. So sin 2, 1 sin 2 theta plus 1 sin 2 theta will be 2 sin 2 theta. Okay, 1 plus 1 is 2 times, here it is. So it will be twice of sin 2 theta. So the option number is 4. Option number 4 is given as 2 sin of 2 theta. Okay. Now 10th one,
That is the last one we are taking in the last in this lecture. Tan A is given as 2. And we have to find tan 2A. Okay. So again we require formula. We have written tan 2A. What was tan 2A? It was 2 tan A upon 1 minus tan square A. Okay. This is the formula we have written in the starting of the lecture. Tan 2A is equals to 2 tan A upon 1 minus tan square A. Okay. So we have to find tan 2A. So we can again directly put in the values. Tan 2A is equals to 2 tan A. Twice of tan A. Tan A is given as 2. So we will directly put the value 1 minus tan square A. Tan A is given as 2, but here it is square. So we will take square. 2 square. So it is 2 into 2 is 4 and 1 minus 2 square is 4. So it will be 4 upon minus 3. Okay. So we have got the value of tan 2A is equals to minus 4 upon 3. So the option number is second. Okay. Understood? So we will continue the worksheet in next lecture. Okay. If you have any doubts, you can comment in the comment section. Okay. Bye. Thank you.